Dialogue and inclusiveness is an important, vital essence of democracy. Any dialogue that can take us out of this morass, and any dialogue which will lead to the welfare of the state of Jammu and Kashmir and its people, we are all for it. The entire team from Jammu, which was here along with me, have reposed faith in Dr. Farooq Abdullah, because he is not only the president of the National Conference, he is the tallest leader of Jammu and Kashmir, and he has assured us that he will represent us and the people of Jammu and Kashmir with his wisdom, and he alone can take this dialogue forward for the welfare of the people of Jammu and Kashmir, and anything that is for the welfare of Jammu and Kashmir. So far as Jammu is concerned, the pluralistic Jammu has its own aspirations and its own desires. We are for singular Jammu and Kashmir, have always stood for the unity of Jammu and Kashmir and equitable justice to all regions and sub-regions of Jammu and Kashmir, and we will always hold the aspirations of all the people of Jammu and Kashmir as much as for Jammu and Kashmir and Ladakh. In Jammu and Kashmir, without dialogue process between the two countries, because yesterday when we asked this question, Mehbooba Mufti, I will not get into the intricacies. Dr. Farooq Abdullah is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India, and it's an inclusive dialogue, and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. We are for Jammu and Kashmir, for the people of Jammu and Kashmir. We are not here for any power politics. We are here for the people of Jammu and Kashmir, and we will always stand for the people of Jammu and Kashmir, their welfare, their growth, their development. बात चल रही है कि सिर्फ डिलिमिटेशन पे बात होगी और मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, वो तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने मीटिंग बुलाई. do you expect any electoral outcome out of this? Do you expect any electoral steps? Personally, I am an optimist, and any dialogue is the way forward, and dialogue should be allowed to happen. We hope that the two sides discuss with an open mind, with only one objective, that is the welfare of the people of Jammu and Kashmir and the identity of Jammu and Kashmir and its people. कोई ऐसी बात नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. जम्मू जो है वो दरवाज़ा है दिल्ली का कश्मीर की तरफ, और जम्मू जो है वो दरवाज़ा है कश्मीर का दिल्ली की तरफ. जम्मू अपने मौक़िफ़ पे, जम्मू हमारा एक ही मौक़िफ़ है, एक सिंगल जम्मू कश्मीर की यूनिटी, इंटेग्रिटी को बनाए के रखना और जम्मू कश्मीर के लोगों के भावनाओं और आकांक्षाओं पे पूरा उतरना. जम्मू वाले बहुत सारे विरोध कर रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है. देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो कद है वो किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं, किसी एक इलाके का मोहताज नहीं. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर लद्दाख की बेहतरीन अक्कासी करेंगे, लोगों की भावनाओं की अक्कासी करेंगे, और उन्होंने हमेशा की तरह हमेशा जब बात की उन्होंने जम्मू की भी की, कश्मीर की भी की, लद्दाख की भी की. उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, उन्होंने हिंदू की बात की, मुसलमान की बात की, सिख की बात की, ईसाई की बात की, बौद्ध की बात की, और फारूक अब्दुल्ला वही तरीके के साथ अपने जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे. ना जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ कोई ठेस पहुंचेगी, ना कश्मीर के, और जो भी बात होगी हमारी तरफ से वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की होगी. और हम ये समझते हैं कि डायलॉग का सिलसिला जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाएगा, और हम उम्मीद पे कायम हैं. ऐसे नाउम्मीदी करने की कोई ज़रूरत नहीं. यहाँ जम्मू की डेलीगेशन के साथ आया था, मैंने बता दिया है जो बातचीत हुई,
और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की वहाँ नुमाइंदगी करेंगे और उनका वो कद है कि वही एक आदमी है जो सही माने में हमारी तर्जुमानी कर सकते हैं। हमने उनको पूरा दिया। और जहाँ तक वार्तालाप का बात है, बातचीत का सिलसिला है, हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में बातचीत जो है वही एक मूल होता है और मूल जड़ होती है, और बातचीत से कभी आड़े नहीं आना चाहिए। बातचीत करके ही हल निकलता है, और कोई भी बातचीत जो जम्मू कश्मीर के राज्य की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए हो, और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीनों खित्तों की सही माने में तर्जुमानी करे और अक्कासी करे और उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं तक पूरी उतरे, उस बातचीत का हम हमेशा खैर मकदम। क्रॉस बॉर्डर टॉक्स हो रही हैं कंटिन्यूसली एनएसए लेवल की और बाकी लेवल्स की, क्या आप मानते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर टॉक्स कल की मीटिंग में भी एक अहम हिस्सा रखेंगे? क्योंकि देखिए, कल देखिए 3-3.5 घंटे की हमारी बातचीत हुई। कल डॉक्टर साहब वहाँ जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब खुद मीडिया को बताएंगे उन्होंने क्या बातचीत की और क्या बातचीत से निकला। लेकिन हम डायलॉग के हक़ में, डायलॉग जो है वो लोकतंत्र का एक मूल बिंदु है, और डायलॉग जिससे कि जम्मू कश्मीर के अगर लोगों की बेहतरी हो तो हम वो डायलॉग को हमेशा उसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस इस वक्त कटघरे पे खड़े हैं, जिस तारीख के मोड़ पे खड़े हैं, उससे उनको बाहर निकाला जाए, यहाँ अमन शांति का माहौल बनाया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ और उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक आगे की रणनीति बने। राइट नाउ वी आर एट द क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री in Jammu and Kashmir, and dialogue is the only way forward. There is no reason to sabotage the dialogue. We are going with an open mind. Dr. Farooq Abdullah is the tallest of the tall leaders in Jammu and Kashmir, whether somebody likes it or not, and he is the best person suited to represent Jammu and Kashmir and represent the people's aspirations of Jammu, Kashmir and Ladakh. We have ensured with him, and he has assured us, like always, that all three regions will be represented equitably and properly. मैं सिर्फ यही कहूँगा, डायलॉग होना चाहिए। जम्मू की जो भावनाएं हैं उनकी भी कदर होनी चाहिए, कश्मीर की भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए, लद्दाख की भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए। जम्मू की अगर भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कश्मीर की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लद्दाख की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के The dialogue has been invited by the Prime Minister of India. He is the Prime Minister of the country. The Prime Minister of India has called for an inclusive dialogue. The party will be represented by Dr. Farooq Abdullah. Jammu and Kashmir will be represented by Dr. Farooq Abdullah. What comes out of the dialogue will be after the dialogue. That you will hear once the meeting is over. United Jammu and Kashmir. We are for the unity and integrity of Jammu and Kashmir. How can we compromise on anything short of Jammu and Kashmir state? It's a state carved out by Maharaja Gulab Singh and state carved out by the Dogras. And the Dogras will never want the state to be... of course, our own identity, our job protection, our land protection, everything should be guaranteed.